bright future, School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हमारा 8.1 क्लास 10th की जो मैथ्स की जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसके पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ आपको फर्स्ट वाले वीडियो में। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें 8.1 के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनो। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, got it? ये हम लोगों को यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि एंगल A और B, एंगल A and B both are equal to each other, we have to find out it, got it? चलो, firstly we will draw, if you want to find out the angle A and B, I will draw a triangle so that you can understand very easily, ठीक है। Suppose we have to take the angle A and B are acute angle here, got it on the student? So angle A and B are acute angle here, so I can't take the A and B at this point because this point has become right triangle, got it? Right angle, it means this angle measures this, the measurement of this angle is 90 degree now, ठीक है। So in the question is clearly mentioned as A and B is acute angle, so we will take A and B here, got it on the student? ठीक है, A, B and C, ठीक है। चलो, these are the acute angles such that cos A is equal to cos B, ठीक है। Here is given that cos A is equal to cos B, so if I will write the cos A is equal to cos B, what is the meaning of this equation? देखो, cos A, it means we are calculating our calculation about the only angle A, not other angles, ठीक है। तो according to the angle A, cos A it means what, and I have already told you, you have to learn the formula of the trigonometry, got it? तो here is mentioned, I have used the short form, ठीक है, so that you can learn the formulas of this exercise, got it? So here is, you can clearly see that sin theta it means perpendicular hypotenuse, and cos theta it means you can say that base upon hypotenuse, and tan theta it means perpendicular upon base here, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ cos A का फॉर्मूला चाहिए, इट मींस वी आर रिक्वायर्ड ओनली बेस अपॉन हाइट हियर, गॉट इट ऑल स्टूडेंट? तो अकॉर्डिंग टू एंगल A, व्हाट इज बेस हियर? यू विल से दैट सर बेस इज AC, got it? And hypotenuse is AB, got it? So I will write the values of base and hypotenuse here, got it? Now cos B, according to the cos B, what is base? So you will say that sir BC is the base, and what is hypotenuse? You will say that sir hypotenuse is AB here, got it? So hypotenuse it means AB here, got it student? So now you can clearly see that AB and AB both are here, so we can cut these two type of values. When we cut these two type of values, we will get AC is equal to BC here. Then what is the meaning of this important equation? It means AC is equal to BC. What is AC? AC is the base, it means here is AC, and BC means this side, got it? What is the meaning of the triangle when two sides are equals? You know very well what says this type of triangle. We can say that it is an isosceles triangle in which two sides are equal only, got it? Two sides are equal only, so this triangle has become, according to this equation, AC is equal to BC, it means this is an isosceles triangle. And according to the isosceles triangle, what is the property of isosceles triangle? है ना, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर जो भी हमारी इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट जो एंगल्स हैं
ये मेरी इक्वल साइड से इसके, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल एंड इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो दिस थ्योरम इज ऑलरेडी स्टडीड बाय यू इन द 9th क्लास, गॉट इट ऑन स्टूडेंट, एंड यू हैव स्टडीड अबाउट द ट्रायंगल्स, गॉट इट। सो आई विल यूज दैट थ्योरम, ठीक है, यहाँ पर ये वाली साइड के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल एंड दिस साइड के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे। सो आई कैन से दैट एंगल ए एंड एंगल बी इज बोथ आर इक्वल, ठीक है। क्यों बोला मैंने इन दोनों को इक्वल? मैंने इन दोनों को इक्वल इसलिए बोला क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द आइसोसेलेस थ्योरम, व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल के थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है। तो हम लोगों को यही प्रूफ करना था कि a इज इक्वल टू b होता है, सो a इज इक्वल टू b इज हियर, हेंस प्रूव, यू राइट, हेंस प्रूव हियर, गॉट इट ऑन द स्टूडेंट। आई होप idea is clear here, got it। now move to the next question। next question is that you have given this cot theta is equal to the 7/8, so you have to evaluate the value of this type of equation, got it, ठीक है। चलो अब हम लोगों को जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सो वी आर गिवन cot theta upon 7/8, got it। if I will draw the diagram, so you can clearly see that if I will having is a b c, so here is theta, so you can say that ki what is theta, what is cot, what is the ratio of the cot, so you will see, you will say that cot, it means what, this is the value of cot, it means base upon perpendicular, got it। so you will write here base upon perpendicular, the formula for the ratio for the cot is the base upon perpendicular, so you can clearly see that about the theta, if I will take here theta, so you will see, you will say that the base is 7, so 7 here, ठीक है, it means perpendicular, perpendicular it means 8 here, got it also। so I have find out the values of base and perpendicular here to compare the equations, ठीक है। now these are the ratios, so I will consider it 8k and 7k also, got it। so when we are given the ratios in the form of the values of in the form of ratios, so we will take the values in the form of x or k or p q r s, whatever variable is required, got it। so now I have to find out the value only the AC, है ना, by the using of Pythagoras theorem here। so I will use the Pythagoras theorem, you know very well what is the Pythagoras theorem, it means hypotenuse square, so here is hypotenuse is AC and base square, it means you will say that base is AB square, ठीक है, and perpendicular it means you will say that the perpendicular is BC here, so you will take the square of BC, got it। now AC square we are required to find out it, got it। so AC is remaining here, got it। now AB square it means 7k square, 7k square, 7 square it means 49, so I will write here 49k square। BC it means what, BC it means perpendicular, so I will write the square of BC, it means what is the value BC it means 8k, so I will square the 8 means 64 and k square is also, so you will write here 64k here, got it, 64k square। now if I will add these two values, so 9 plus 4 13, carry 1 10 or 1 11, ठीक है, got it। you will get the answer 113, so k square here, k square is also, got it। now AC square, so I have find the value, AC square is equal to the 113k square। now when you will find the value of only AC, now you will put the root of this value, it means 113k square। now the pair of k is out of the root, so I will get the value only 1 113k here, got it all the student। now I have find the value only the AC is root 113k, so I will put here in the diagram root 113k here, got it। so this ratio, now I will put the value here, so I have to find out the value is that equation, got it। so if I will look it very carefully, so I can compare this equation by the identity,
What type of identity here? A plus b and a minus b here. So I can write a plus b and a minus b. What is the identity of this? Now a square minus b square here. So I will compare this equation by this equation. So I will get the value of a it means 1, and I will get the value of b it means sine. Got it? Now same as for the denominator, if I will compare this equation to this equation, so I will get the value of a is 1, and for the value of b it means cos. Got it, understood? So I will put the value here, and I will write the 1 minus sine square theta here. Got it, understood? A square minus b square. Got it? So for the denominator is also same as, it means I will write the 1 minus cos square theta here. Got it, also? Now I put the value of sin theta and cos theta here, and I will solve it. Got it? So 1 minus sin square theta, then what is the ratio of sin? ठीक है, ratio of sin, it means perpendicular upon hypotenuse here. So I will take the perpendicular, it means BC, and hypotenuse it means AC. So I will put that directly. Got it? Value directly 8k divided by root 13k. 8k divided by root 13k here. So and square is also here. What it also? Now put the value of cos square theta. It means I have the ratio for cos is also based upon hypotenuse. So I will say that the base is AB here. So I will write the 7k, and hypotenuse is root 113k here. So I will write the root 113k, and I will put the square here. What did understand? Now if I will solve it, so I will get the value 1 minus 64k square divided by 113. If I will square the root value, so I can see that this value will become 113 only, and k square is also. I have already studied, and you have already studied in 9th class about the surds and indices. How can we solve the values of roots? Okay. So here and here is also calculation is same. So 49k square here also, 49k square divided by root 113k square. Got it? I hope you understand. Now k square is k square, from k square cross it. Got it? Now I have to solve these questions. So let me draw first it. अब क्या होगा यहाँ से इस 13 को मैं सॉल्व करूँगा. So I will get 113 minus 64 divided by 113. So I will get, and I will reverse this value. 113 is become numerator here, and 113 minus 49. 113 minus 49. You can clearly see that 113 we can easily deduct. Got it? Now I will subtract this type of value. So I will get the answer 49 divided by 64 here. Got it, all student? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे. ठीक है, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर या फिर इन सब का रेशियोज निकाल करके हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है. क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो हम रेशियोज के फॉर्म में ही इनका क्या निकालेंगे सर, फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे. गॉट इट ऑल स्टूडेंट्स? मूव करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 10. गॉट इट? इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है शायद वो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है. उसमें भी हम लोगों को क्या, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके आप फॉर्मूले, जो फॉर्मूले मतलब कि रेशियोज की वैल्यू परपेंडिकुलर यानी कि साइड से रिलेटेड रेशियोज की वैल्यू पुट करके हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में लगा कि मुझे इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन को उठाया है. गॉट इट ऑल स्टूडेंट? चलो समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल PQR हम लोगों को ट्रायंगल बनाना है. कौन सा वाला ट्रायंगल बनाना है सर? राइट ट्रायंगल ही बनाना है. गॉट इट? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन ओनली द राइट ट्रायंगल्स, नॉट अदर देन ट्रायंगल्स. गॉट इट? चलो नेक्स्ट, चलो राइट एंगल सबसे पहले हम लोग राइट एंगल बनाते हैं. सो आई विल ड्रॉ राइट एंगल फर्स्ट according to the questions. What says? It means we have the triangle PQR right angle at Q. हमारे पास राइट एंगल है कहाँ पर? Q पर. Q पर मुझे एक राइट एंगल बनाना है. It means I will take the point Q here. Got it?
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन सेज, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर हम लोगों को राइट एंगल बनाना है, सो आई विल टेक द क्यू पॉइंट हियर, गॉट इट। नाउ अगर मैं क्यू को यहां ले लेता हूं सर, पी को यहां ले लेते हैं, आर को यहां ले लेते हैं, ठीक है ना। नाउ आई, मुझे क्या दिया हुआ, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, सो आई विल राइट हियर व्हाट, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू द 25 सेंटीमीटर here. So what we have to find out, PQ is equal to 5 centimeter, and also if I will put the value PQ it means here is base here, got it, so 5 centimeter, ठीक है। अब determine the value sin P cos P and tan P, ठीक है ना। according to this P, अब इस P के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, इन रेशियोज की वैल्यू निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो अब इन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करने के पहले हम लोगों के पास तीनों साइड्स होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए और हाइपोटेनस होना चाहिए, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए और हाइपोटेनस होना चाहिए, टेन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए और बेस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारे पास तीनों ही साइड्स की रिक्वायर्ड होगी कहीं ना कहीं, इसलिए हम सबसे पहले तीनों साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले पी आर की वैल्यू, अगर मैं यहाँ से आप लोगों को बोलता हूँ कि पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप क्या बोलोगे सर, क्यू आर को आप इधर की साइड ट्रांसफर करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू पी आर 25 माइनस क्यू आर हियर, 40 यहाँ पर कितना हो गया, 25 माइनस क्यू आर हियर, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे बोलता हूँ सर ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यू विल राइट हियर इन ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग, क्या यूज कर रहे हो आप, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आप इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है सर, हाइपोटेनस स्क्वायर, इट मींस यू विल राइट हियर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर, इट मींस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हियर, व्हाट इट इज, सो आई विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम हियर, ठीक है। चलो अगर मैं पी आर की वैल्यू फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं पी आर की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं, सो यू विल गेट द whole square, got it। now you are given also according to the question PQ is 5 centimeter, so you will put the value of PQ it means 5 centimeter, 5 means 5 का square 25 centimeter, ठीक है, plus QR square, so you will write the QR square here also because you do not have the value of QR, got it। now solve it by the using of formula a minus b का whole square, got it। now you should know the formula a minus b whole square, what is a square plus b square minus 2ab, so I will use the formula, if I will square of 25, so I will get the 625 minus plus QR square minus 2ab, it means 25 multiplied by 2, it means 50 QR is equal to 25 plus QR square here, ठीक है। चलो now you can clearly see that here is QR also and here is QR also, you can cross it by using the minus sign, ठीक है। चलो 625 माइनस ये, चलो यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसकी, 625। अब 625 इसको जब मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 625 माइनस हो जाएगा, इसमें से रिड्यूस हो जाएगा, इट मींस आई विल गेट ओनली द 600 हियर, गॉट इट। तो यहाँ पर अगर मैं 600 मेरे पास मिलता है, ठीक है, तो 25 से माइनस हो जाएगा, 25 को मैं इधर लेके आया, इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये जो नेगेटिव वैल्यू ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, सो आई विल गेट 50 QR, गॉट इट, कि नेगेटिव है साइन तो उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मैं QR की वैल्यू आपसे बोलता हूं बेटा QR की वैल्यू फाइंड आउट करो तो 600 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। ये कितने टाइम से रिड्यूस होगा सर, 12 टाइम रिड्यूस होगा, सो QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, so here is centimeter, so I will get the value, this value is also in centimeter, got it। अब मैंने क्या किया सर, यहाँ पर मैंने QR की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, so QR is here, so I will write the QR is equal to 12 centimeter, so I have find out, got it। now अगर मैं PR की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो अगर वापस से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ठीक है, तो उसमें कोई सेंस नहीं क्योंकि क्वेश्चन फिर से बड़ा हो जाएगा। सो अगर मैं PR की वैल्यू फाइंड आउट करना तो इक्वेशन नंबर 1 की यूज करूंगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई कैन क्लियरली सी दैट PR इज इक्वल टू व्हाट, 25 माइनस QR, QR इट मींस 12, सो आई विल गेट दैट PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हियर, ठीक है। तो PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। नाउ I will find the required ratio, required trigonometric ratios. What the first trigonometric ratio is given, sin p. It means what? So firstly, I will find the value of sin p. Sin p. It means I need the perpendicular and hypotenuse here.
गॉट इट? तो व्हाट इज परपेंडिकुलर? 12. What? 12. And hypotenuse according to diagram is 13. Got it? So sin p is equal to 12 upon 13 here. Got it? Now cos p base upon hypotenuse. So base it means pq it means 5 upon hypotenuse, same as 13. Got it, all students? Now I will find the value of tan p. So tan p here. Now you can clearly see that क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? पंडित बुद्धि प्रसाद. इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज 12 हियर. सो आई विल राइट 12 एंड बेस इज व्हाट? 5 सेंटीमीटर. मींस आई विल राइट 5 सेंटीमीटर. सो मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज को यहां पर मैंने फाइंड आउट कर लिया, जो कि यहां पर थी, जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मुझसे पूछे हुए थे वो सारे रेशियोज मैंने फाइंड आउट कर लिए. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है. अब इसके बाद इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या है सर? ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं. सो आई होप यू कैन सॉल्व द ट्रू एंड फॉल्स वेरी इजीली. ठीक है, वेरी इजी टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ट्रू एंड फॉल्स. सो ट्राई टू सॉल्व द ट्रू एंड फॉल्स. व्हाट इट ऑल स्टूडेंट? चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ. तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, एग्जांपल्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. व्हाट इट ऑल? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में.